गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप भल थी समस्ते। तो लास्ट क्लास रे तुमको किसी असाइनमेंट देइथिली ऑन मोलिकुलर मास कौन कौन ना मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड फेरिक क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो तुम भर केते जण देख सॉल्व करी मते पठेछ ओनली काउंटेबल बहुत कम जोटा कि मोटे भलो कथा नुहे। सो आज तुम सेटा सॉल्व कर दोची नेक्स्ट क्लास रे हम चाहूची मोस्ट ऑफ यू should solve it and send it to me. So start करिवा छुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट दुईटा पार्ट रहिछि जेम सिखैथिल तुमको मैग्नीशियम आ उडला कार्बोनेट हला मैग्नीशियम वैलेंसी होछि 2 कार्बोनेट वैलेंसी होछि 2 सो दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन तले कते हे जिवो Mg2CO3 होल 2 तेनु आमे डायरेक्ट लिखबा कर मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 कारण 2 2 विल कैंसिल आउट बर्तन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करम मोलिकुलर मास कितना होबो मैग्नीशियम विल बी 24 कार्बन 1 कितने 12 एटॉमिक मास ऑक्सीजन 3 एटम्स आर देयर 3 into 16 कितना होची देखो 36 ये होची 48 ताले कितना होची देखो 48 12 60 प्लस 6 हो गला 60 प्लस 84. So the molecular mass of magnesium carbonate will be 84. Then next sulfuric acid. तुम कहती sulfuric acid formula is H2SO4. You have to remember sulfuric acid formula होची H2SO4. molecular mass calculate करबा हाइड्रोजन होची दुईटा अछि so 2 hydrogen atoms atomic mass of hydrogen is 1 plus sulfur 1 atom so 1 into 32 plus ऑक्सीजन कितना है चारटा 4 into atomic mass of oxygen that is 16 ताले कते होची देखो ये 64 32 96 plus 2 98. So the molecular mass of sulfuric acid is 98. Then comes ferric chloride. Ferric देखो कहती ferric हला Fe chloride हला Cl. ferric कहती तुमको वैलेंसी होची 3 chloride वैलेंसी होची 1 ताले कोन हो दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन एमती आसीबे ताले फेरिक क्लोराइड फार्मूला कोन हे जिवो FeCl3 FeCl3 मोलिकुलर मास कैलकुलेट करबा आयरन मन रखियो छ आयरन मोलिकुलर मास होची 56 प्लस क्लोरीन केतरा अछि तीनटा सो 3 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ताले कते होची 106.5 प्लस 56 ताले हे होची 162.5. So the molecular mass of ferric chloride will be 162.5. Then calcium hydroxide देखो दुईटा पार्ट रहला calcium आउट रहला hydroxide OH वैलेंसी calcium होची 2 hydroxide होची 1. So they will interchange their position and calcium hydroxide formula करा हो CaOH whole 2 molecular mass कैलकुलेट करबा कैल्शियम केते ना 40 एटॉमिक मास होची 40 प्लस ए 2 टाको ब्रैकेट स्टार्ट करबा 2 into ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते 16 हाइड्रोजन होची 1 ताले 17 into 2 34 plus 40 74. So the molecular mass of calcium hydroxide will be 74. Then aluminum sulfate aluminum Al वैलेंसी होची 3 sulfate SO4 वैलेंसी होची 2 so they will interchange their position ताले कोन हे जो एल्युमिनियम सल्फेट फार्मूला ना Al2SO4 होल 3 Al2SO4 होल 3 मोलिकुलर मास कैलकुलेट करबा देखो एल्युमिनियम केते कहितली 27 दुईटा अछि so 2 into 27 प्लस एटी होल 3 अछि तेनु 3 टाको ब्रैकेट स नै जो सो मेक इट ए प्रैक्टिस जोटी होल अछि ताको ब्रैकेट स्टार्ट कर दो सल्फर केते हला गोटे अछि 32 प्लस ऑक्सीजन चारटा अछि 4 into 60 ताले 64 प्लस 32 96 into 3 96 into 3 ता माने 96 into 3 है 288 प्लस ये हला 54 ताले केते गला 340. So this is the molecular mass of aluminum sulfate. तो बहुत जन ठीक करे देइथलो किछि आयरन टाकू राउंड अप कर नथिलो 56 मन रखियो आयरन टा 56. So this is the answer of the assignment given to you earlier. Next तुमको आ किछि असाइनमेंट देबी
ताको तुमे सॉल्व करी मते पठेबो ओके सो स्टूडेंट नेक्स्ट असाइनमेंट इज दिस calculate the molecular mass of acetic acid you have to remember the formula acetic acid formula is CH3COOH acetic acid then ferrous chloride तुमको last time देखिले ferric chloride तुमको देखिले ferrous has got 2 valencies so ferrous is 2 ferric is 3 so you have to remember that ferrous is 2 ferric is 3 तो ferrous chloride तुम लिख पाएगा आराम से then lithium hydroxide you can write calcium acetate remember calcium acetate I am solving it for you calcium is 2 acetate is CH3COO1 so they interchange their position so what it will become now in case of acetate formate so it is written first tale on our CH3COO whole 2 Ca so this is calcium acetate you have to remember in case of acetate formate so they are written first and ions are written first then magnesium phosphate you can very well write so by tomorrow you should solve it and send it to me all of you तारे की भल लागिवो तो एसिटिक एसिड मन रखलो और कैल्शियम एसिटेट ऑलरेडी फार्मूला तुमको हम दे दी सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट विल स्टार्ट इक्विवेलेंट मास a very important portion so listen carefully so first let us know what is equivalent mass कौन जानिबा के it is a common scale used to compare different elements suppose we want to know how many parts by mass but hydrogen will combine with how many grams of oxygen so we can compare it only if we bring it to a common scale गोटे common scale को आनले ही हमें कंपेयर कर करा एवं जानि परिबा जे हाइड्रोजन नो केते भाग ऑक्सीजन केते भाग से मिसिबो टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल so it is a common scale used to compare different elements that is the proportion in which the different elements will combine with each other को proportion से हम परस्पर संगे combine करिवे to know it we must have the idea of equivalent mass then how to define it देखियो केमती डिफाइन करा जाए डेफिनेशन देखि कि वरीड हवार नाही simply you have to remember it वो बहुत इजी ट्रिक्स तुमको बता देबी how to calculate the equivalent mass so from the very beginning you need not worry regarding this long definition खाली फॉलो करने की चेष्टा करो so it is defined as the number of parts by mass of substance which combines with or displaces directly or indirectly kete now 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine so what are these three now these three are the equivalent mass of hydrogen oxygen and chlorine ए तीनटा कोन कोउठ आसला रेफरेंस ना हाइड्रोजन नो इक्वल मास होची 1.008 ऑक्सीजन नो इक्वल मास होची 8 क्लोरीन नो इक्वल मास होची 35.5 सो दीस थ्री आर टेकन एज द रेफरेंस ए मान सागरे जे जति की कंबाइन होची और जति की डिस्प्लेस होची सेटो हम इक्वल मास कैलकुलेट कर परबो सो सपोज s grams of a substance combines with either of these three that means 1.008 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 parts or gram of chlorine then equal mass of that substance will be x gram जदि एतिक संगे कंबाइन कला ताले से सब्सटेंस रो इक्वल मास होबो x so this is what we call equivalent mass तुमको ଗୋଟେ सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करी देखे दोची हाउ टू कैलकुलेट इट ओके ओके स्टूडेंट्स जोटा तुम कहली डेफिनेशन पार्टटा तो ताकू मन रखिया पई तुमको टिके पडिबो सो यू टू रिमेंबर इट देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल 1 in calcium oxide CaO is the formula of calcium oxide हमें कैलकुलेट कर करबा ना calcium what will be the equal mass of calcium so we have to start with like this in calcium oxide one atom of calcium combines with one atom of oxygen calcium रो गोटे atom oxygen रो गोटे atom से combine करछि so in ratio of atomic masses बता नै जिबा atomic mass से हेले atomic mass of oxygen केते 16 that means 16 grams of oxygen will combine with calcium का atomic mass 40 so 16 gram of oxygen will combine with 40 grams of calcium so 1 gram of oxygen will combine with 40 by 16 gram of calcium हमर by definition oxygen केते दरकार combine हो दरकार 8 grams so 8 grams of oxygen combines with 40 by 16 into 8 gram of calcium solve करते पाइबो केते 20 gram of calcium
So that becomes the equal mass of calcium. Hence, the equal mass of calcium is 20. So this is how you have to solve the numericals. Example 2 का सिवा magnesium hydride MgH2. MgH2. एटे देखो magnesium रो गोटी एटम हाइड्रोजन गोटे मॉलिक्यूल से कंबाइन करछि तेनो हाइड्रोजन रो मास कते जाउछि 2.016 ग्राम तो के जन मते पचारतो हाइड्रोजन में हमें 1.008 कोठी यूज करिया हियर यू हैव टू यूज सो हाइड्रोजन दुईटा माने तार मास कते होला 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ मैग्नीशियम एटॉमिक मास कते 24 so 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम तार सेंटी से प्रोसेस राशि अछि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will combine with 24 by 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन so by definition हाइड्रोजन केते दरकार हमकु ना 1.008 पार्ट ताल 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ केते हबो ना 24 डिवाइडेड बाय 2.016 into 1.008 so that it will give you 12 gram so the equal mass of magnesium is 12 so this is how you have to solve the numericals तो तुमको आज पे यति की तुमको किछ असाइनमेंट्स देबी एबे so you try to solve the assignments and send it to me so students this is the second part of assignment based on equivalent mass तुमको जहां बुझेली दुटा सॉल्व भी कर देली numericals so based on that you have to solve this assignment question 1 calculate the equivalent mass of aluminum को formula use करबो which formula to be used na aluminum chloride AlCl3 so using this formula you have to calculate the equivalent mass of aluminum question 2 calculate the equivalent mass of iron that is Fe using the following formula two formula I have given that is FeO ferrous oxide and Fe2O3 ferric oxide so in these two oxides you have to calculate the equivalent mass of iron Fe so these are the assignments for you so hope you have understood the basics of equivalent mass so don't worry at all तुम यदि complicated किछ लागु थाए so there are very simple formulae to calculate the equivalent mass of different substances you know a chemical substance is broadly divided into three parts that is acid base and salt so in the next class I will give you different formulae how to calculate the equivalent mass of an element equivalent mass of an acid equivalent mass of a base equivalent mass of a salt equivalent mass of an ion so these are the direct formula which you can use to calculate the equivalent mass so this is the basic so that's why you need to know these things तुम जानिया निहात दरकार से लागि तुमको देली so hope you will understand so this is for today thank you